In this lecture, we will see difference amplifier using BJTs. Difference amplifier using BJT. Now, what are we supposed to talk here? What we need to understand is the H parameter analysis of a difference amplifier which takes the use of BJT. I can make a difference amplifier either using a BJT or a FET. So यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हाउ डू वी एनालाइज इट यूजिंग द एच पैरामीटर्स. यानी कहने का मतलब ये है कि वी हैव सेड कि इन डिफरेंस एम्पलीफायर विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेमेस्टर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ. सो हियर वी सेड इफ दिस इज अ डिफरेंस एम्पलीफायर तो इसमें देर आर टू इनपुट टर्मिनल्स V1 एंड V2, टू आउटपुट टर्मिनल्स V01 एंड V02. हम इसमें से किसी भी इनपुट टर्मिनल से हम इनपुट दे सकते हैं और किसी भी आउटपुट टर्मिनल से हम आउटपुट ले सकते हैं. हम चाहें तो किसी एक इनपुट में इनपुट दे सकते हैं, हम चाहें तो इसमें दे सकते हैं या इसमें दे सकते हैं, हम चाहे तो आउटपुट यहाँ से लें या यहाँ से लें या फिर दोनों से लें. तो आई हैव बोथ द ऑप्शंस. तो हम लोगों ने थियोरेटिकली ये कहा था उस समय, वी सेड यूजिंग आवर theory of this BJT amplifiers, if you remember. Let me get back this picture. Right. So हम लोगों ने उस समय कहा था कि if I apply a voltage signal here this way, तो और इसको हम grounded रखते हैं. This one is grounded. एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल एंडेड इनपुट. तो इससे हमको क्या होगा, इस साइड में आई विल गेट एन एम्पलीफाइड सिग्नल बट इन एंटी फेज, और इस आउटपुट में आई विल गेट एन एम्पलीफाइड सिग्नल बट इन फेज. ये हमने देखा था. प्लस हमने ये भी देखा कि अगर हम इसके जगह पे यहां से ये सिग्नल अप्लाई करते हैं, इफ आई अप्लाई इट दिस वे, दिस इज स्टिल सिंगल एंडेड इनपुट. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एम्पलीफाइड बट एंटी फेज, दिस विल बी एम्पलीफाइड बट इन फेज व्हेन दिस वन इज ग्राउंडेड. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिंगल एंडेड इनपुट. इसके बाद एक था डिफरेंशियल मोड इनपुट और एक था कॉमन मोड इनपुट. तो कॉमन मोड इनपुट में क्या हम कर रहे थे, कॉमन मोड इनपुट में when I was using the same signal in both the input terminals. Okay, same signal in both the input terminals. कहने का मतलब हम यहाँ भी इसी तरह दिए और यहाँ पे भी इसी तरह दिए. तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, you will get something, इसके कारण यहाँ पे you will get something like this because of this one, ये होगा. एंड यहाँ पे you will get amplified and this signal, right? एंड इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे you get an inverted but amplified signal, और इसके कारण this is for 2, this is for 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, you will get an in phase but amplified signal. Okay, ये हमको मिल रहा है. ठीक है. एंड द थर्ड वन वाज डिफरेंस मोड इनपुट, यानी दोनों में अलग अलग दे रहे हैं. सो इन दैट केस व्हाट वाज हैपनिंग वाज, what we said was कि if we give the signal in this manner, that is the difference mode, so we give a signal over here, say like this, and we apply an opposite and equal signal here like this way. तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण there will be definitely because of 1 here, और because of 2 हमको क्या मिलेगा, I'll get because of 2 this one. इसके कारण तो हमको इन्वर्टेड मिला, और इसके कारण हमको क्या मिलेगा, I will get a symbol like this.
Oh no, I'm sorry, I'm very sorry. Because of this, in this terminal we will also get this type of a signal because of 2. यहाँ पे क्या मिलेगा? You will get this because of 1 opposite in phase signal यहाँ पे मिल रहा है, और because of 2 what you will get is this because of 2. इसका just anti यहाँ पे मिलेगा. So this is the difference mode part. तो ये हम देख चुके हैं theoretically. We have studied this theoretically in semester 4. Now we want to see it कि इसको H पैरामीटर एनालिसिस से जो चीज हम बोल रहे हैं the patterns, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं. So let us try to prove these. Okay. Let us come to this part, the second part. Now the previous circuit which was like this, इसको अगर हम AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं तो ऑल द DC सोर्सेज नीड टू बी ग्राउंडेड, ये हम जानते हैं. तो नाउ वी वांट टू मेक द AC इक्विवेलेंट सर्किट. सो व्हाट वी डू इज ऑल द DC सोर्सेज आर ग्राउंडेड. यू सी दिस इज ग्राउंडेड. वी हैव RC1 RC2 as they are were named, RC1 RC2 V01 V02 V1 V2 RE, and this will be grounded and that is also grounded. So here you can see that is what is done. RE is there, V1 is there, V2 is there, V01 V02, RC1 RC2, this is C1 C2. These are the two output terminals, Q1 and Q2. These are two transistors. These are the emitters C1 and C2, the collectors of the two transistors. E1 and E2 are the emitters of the two transistors. B1 and B2 are the bases of two transistors. ये हमको मिल गया. So now what I will do is, using this concept, now I will try to draw the H parameter circuit. H parameter circuit भी हम लोग बनाना जानते हैं. So if I go back a bit and we try to draw the H parameter equivalent circuit, so then we will be drawing this circuit. We will be basically drawing this circuit. This is called the H parameter. I have selected this book form directly. It is because there are so many equations and writing those equations using this pen is not very simple. So I preferred using this diagram. So this one is called small signal equivalent circuit of the difference amplifier. ये जो circuit था previous circuit, इसको हम AC equivalent में convert कर दे रहे हैं. So we will definitely have V1 HIE between the base and the emitter terminal. HIE होगा. HFE B1, that is the value of RC1. This is V01 this side. ये emitter दोनों का common है, तो that is a common line of this emitter. यहाँ पे V02 was what? V02 was the output from the collector 2. वहाँ से RC2 was the collector resistance जो कि VCC के साथ connected था. It will be grounded. This is HFE. Let me zoom it a little bit. You can see from here. So now what we have is, we have HFE IB2 and this is HIE. HIE again is the input impedance of the BJT. So that is there. So you know the meaning of HIE, HFE and so on. So this is my H parameter circuit and the current that is flowing is 1 plus HFE into IB1. From this side 1 plus HFE into IB2. This is what is flowing because IB2 is the current flowing through the base, IB1 is the current flowing through the base because of the input provided either in V1 or in V2. Now because of the collector C2, that is the current IC2, because of the collector C1, the current is IC1. So eventually we can write down the network equations as V1, this will be equal to IB multiplied by HIE, alright, plus here you go like this, 1 plus HFE, 1 plus HFE, ये ऐसे जा रहा है, like this, ठीक है. Let me zoom it less, ठीक है. इसको अगर हम zoom less कर दिए तो ये ऐसे जा रहा है. तो अगर इस तरह से जा रहा है तो यू कैन सी हियर इट इज 1 प्लस
You see here. So 1 plus HFE IB1 यहां से फ्लो करेगा इधर से, और RE के थ्रू से 1 प्लस HFE IB2 भी फ्लो कर रहा है. तो इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं, सो V1 इज इक्वल टू IB1 प्लस इंटू HIE. 1 प्लस HFE कॉमन ले लिए, IB1 प्लस IB2, IB1 प्लस IB2 मल्टीप्लाइड बाय RE. दैट इज डन. सिमिलरली V2 अगर लिखना चाहें तो V2 विल बी IB2 HIE 1 प्लस HFE IB1 प्लस IB2 इंटू RE. IC1 is nothing but HFE IB1 and IC2 is HFE IB2. V01, that means the output from the collector of transistor 1, that is what is V01. So that will be nothing but IC1 multiplied by RC1 with a negative sign. ये क्यों negative sign दिए हैं? Because it is a common emitter amplifier. So the output will be just phase opposite to the input. That is why this negative sign. Similarly, VO2 is IC minus IC2 into RC2, and V0, that is V01 minus V02. So this is the H parameter circuit से हम इतना दूर तक इसको ले आए. We have derived these many equations from this AC equivalent circuit. इस AC equivalent circuit से we get these many equations. So what we have done, we have taken this base circuit, we have taken this circuit, ये सर्किट हम लिए थे, और इस सर्किट को लेने के बाद what I have done is I have drawn the H parameter equation of this circuit. तो H parameter equation बनाने के लिए I have first drawn the H parameter equivalent circuit. ये सर्किट हमने बनाया. Then we have derived these many equations. So that is what is done first. Then from these equations, you note down these equations, and then from these equations what we do is we come here using equation 6.20 and 16.21 and solving for IB1 and IB2, we get this is a simple solution. This is a simple solution using these two equations. What we are doing is we are solving for the values of IB1 and IB2. We get one minus and another one is plus. So while you solve it yourself, you will find out that this is going to be the overall equation for IB1 and IB2. Now using these two equations 16.27 and 16.28, in equation 16.24 and 25, way back you have the equation. You get the values of V01 and V02. So this is nothing but sheer calculations. So you can do all these calculations and you can arrive at this, because we want to prove the physics. We are not here to bother about the calculations. These are simple. You put the values, you get these values. Then putting this 16.29 and 16.30 in equation 16.26, we get V0. यानी V0 को पहले हम क्या किया, IB1 का निकाल लिया अलग, IB2 का वैल्यू निकाल लिया, फिर V01 का वैल्यू निकाले एंड V02 का वैल्यू निकाले, फिर V01 V02 जब निकल गया उससे V0 का वैल्यू निकाले, तो V01 V02 का वैल्यू ये आया, that is 16.31. So normally what is being done is RC1 is equal to RC2 equal to RC ले लिए, यानी सब जो कलेक्टर रेजिस्टेंस था उनको हम बराबर कर दिए, RC कर दिए. And since we know that 1 plus HFE multiplied by RE is very high compared to HIE, okay, why? Because the base emitter junction is forward biased. तो base emitter junction अगर forward biased है तो उसका input impedance बहुत कम होगा. So that is why 1 plus HFE RE is very high compared to HRE. Therefore equation 16.29 through 16.31 may be written as, this is an approximation that is being taken. So they can be written as like this. V01 will be HF. Okay, let me go back a bit. Let me go back a bit. Okay.
You see, what we have done was we have found out the values of V01, right? तो V01 का वैल्यू लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम RC1 इक्वल टू RC2 इक्वल टू RC बनाए हैं एंड 1 प्लस HFE RE को बहुत हाई माने हैं HIE से. So then V01 is written equal to HFE RC, RC1 के जगह पे हो गया, divided by 2 HIE, this is 2 HIE square. All right, you can definitely solve this value. 1 प्लस HFE, इसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, एक्चुअली इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है. सिमिलरली इस वैल्यू को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दिए, सो देन व्हाट वी हैव इज 1 is this is being neglected, this one, this is being neglected, this one, ठीक है. So then we are left with 1 plus HFE RE V2 minus V1 divided by 2 HIE this. So 1 plus HFE, 1 plus HFE RE, this goes cancelled. So you get 2 HIE here and V2 minus V1 is left here, ठीक है. Similarly V02 के केस में भी हम क्या किए, HIE स्क्वायर को हटा दिए, यहाँ से HIE को हटा दिए and we get minus HFE RC by 2 HIE V2 minus V1. इन दोनों को अगर हम बैठा देते हैं V0 में, that is V01 minus V02, we obtain this value. We obtain this value. That is V0 is equal to HFE RC divided by HIE multiplied by V2 minus V1. This is the value that we arrive at. So we take IB1, we take IB2, we take V01, we find out V02, then we obtain V0. Then उसके बाद हम एक approximation लगाने के बाद I obtain the values of V01, V02 and V0. ये values हमको मिला. So these are the values that we get now. So then the differential output voltage V0 we write this way. The differential output voltage V0 is thus 2 times the single ended output voltage V01 or V02. So now let us discuss 2 cases. ठीक है, 2 cases single ended output input के लिए लेना है. तो 2 केसेस क्या हैं, पहले हम माने लेट V2 इज इक्वल टू 0, यानी इनपुट किधर से दे रहे हैं, ये अगर मेरा ये 2 एम्पलीफायर अगर है, ये 2 है, तो हम इससे इनपुट दे रहे हैं, तो V2 को 0 कर दिया, दैट मीन्स दिस पार्ट इज ग्राउंडेड, राइट. आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस, इस पे हम सिग्नल दे रहे हैं. So V2 is 0 and V1 is not equal to 0. कहने का मतलब है the signal is used from this end. Okay. In this setting, V01, V02 and V0 may be written as, you can see from here. ये value क्या हो जाएगा, V2 is 0. तो I get V01 equal to minus this V1. V02 is approximately equal to this and V0 is equal to this. That is what we obtain. So what is the meaning? जब हम V0 दे रहे हैं, when I am using V01 यहाँ पे, और simply V01 is the output, so V1 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो V1 अप्लाई करने से हमको क्या मिल रहा है, V01 कहाँ पे है, इस जगह पे है V01. V01 is something multiplied by V1 with a negative sign. कहने का मतलब क्या है, there is a change of phase. It is in antiphase with V1. ये हमने कहा था. You can see this from the equation. V02, that means the output from this side. This is what? V1 ही है, but it's some amplification is there, but it is in phase. That means the output is this. This is what we have said, and you can see it is coming out. And V0 is negative. That means यहाँ अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पास V0, the overall output जो अगर आएगा V01 minus V02, that is also in antiphase. So what we can say is that V0 and V02 are in antiphase. V01 and V02 ये दोनों आपस में antiphase में हैं. V02 and V1 are in phase.
this V02 and V1 are in phase, ये और ये phase में है. V0 and V1 are in antiphase. You can see negative sign आ रहा है यहाँ पे, तो V0 and V1 are is antiphase. So this situation is illustrated by a different figure. We can go back to a different figure. We can see this figure. So if we have this figure, then you can see here what we have said was, ये अगर हम apply कर रहे हैं, this one is grounded, so I get this signal across V01, this signal across V02, that means this one and this one are in phase, this one and this one are in antiphase, and this one and this one, these two are also in antiphase. Okay. सेम चीज क्या करेंगे अब अगर ये करेंगे कि इसको हम ग्राउंडेड कर दें और यहाँ पे जो है हम सिग्नल अप्लाई कर दें, एनी काइंड ऑफ अ सिग्नल, कोई भी सिग्नल हम अप्लाई कर दें यहाँ दिस साइड, दैट मीन्स V1 इक्वल टू 0 एंड V2 नॉट इक्वल टू 0. In this configuration, the expression for V01, V02 and V0 using the equations, previous equation, what we can do is we can calculate the values as V01 equal to this V2, V02 equal to this V2 and V0 is equal to this V2, right? So what we get is this should be minus, V02 should be minus, there is a minus negative sign missing. So here what we can see is here. So what we can see is the expressions reveal the fact that V01 and V2 are in phase, okay. V02 and V2 are in antiphase, that is why I said a negative sign is missing here. Please put that negative sign. यहाँ पे negative sign आएगा if you see to it. That negative sign which was already there, V2 minus V1 था, तो V1 0 है, तो this negative sign will remain. And V0 and V2 are in phase. You can see they are in phase, okay. And this can be illustrated by another figure. Note that the differential input voltage Vd defined as V2 minus V1, and hence the differential mode voltage AD for the amplifier may be written as AD equal to V01 divided by Vd. So that is HFE by RC divided by HIE. AD either कहीं से भी ले, V01 से लें या V02 से लें. So minus HFE RC by HIE. Let us find out the common mode gain of the difference amplifier. ठीक है, ये हम क्या निकालें? This is what is the differential mode gain. This one is called the differential mode gain. तो हमने पहले ये निकाल लिया. Then I find out the values of V2 minus V1 and we obtain the differential mode gain AD of the amplifier. ये हमारे लिए निकल गया. Okay. Now we find out कि अब common mode में जब लगाते हैं तो कैसा होगा. तो let us see the common mode circuit. पहले तो ये हुआ कि जब इसको अगर हम देखना चाहें फिर से, if you want to see this, तो हम लोग क्या किए हैं, इसको जीरो किए हैं, इधर से सिग्नल अप्लाई किए हैं, तो इसके कारण क्या होगा, ये एंटी फेज में चला जाएगा यूजिंग द इक्वेशन. ये अब हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये नेगेटिव साइन दे रहा था, दिस इज एंटी फेज, दिस विल बी इन फेज विथ रेस्पेक्ट टू V2 एंड दीज टू आर इन एंटी फेज. ये हमको मिल गया फ्रॉम द इक्वेशंस. नाउ लेट अस सी दिस वन, the common mode voltage gain. Let us see the circuit. ये सर्किट प्रीवियस सर्किट से डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे सिर्फ यही है कि यू कैन सी ये IB1 से निकाल के एक लाइन हम ले जाके सीधा इसमें जोड़ दिए, दैट इज IB2. यानी कहने का मतलब है कि यहाँ अगर हम कुछ इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं तो यहाँ भी वही सिग्नल जा रहा है, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड. ये इनपुट दोनों अलग अलग नहीं है, दिस इज कॉमन मोड इनपुट. तो जो इनपुट यहाँ पे है वही चीज यहाँ जा रहा है, एंड आई हैव रिटन V1 इज इक्वल टू V2. सो दिस इज द सर्किट फॉर द कॉमन मोड वोल्टेज गेन. ओके, दिस इज द सर्किट फॉर कॉमन मोड वोल्टेज गेन, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट. अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट आई विल डू इज let me find out the different equations. Okay,
यहां से हम डिफरेंट इक्वेशन निकाल रहे हैं। सो कॉमन मोड को अब V1 V2 नहीं लिख के, IB1 IB2 उस टर्म में नहीं लिख के सीधा हम लिख रहे हैं VC का वैल्यू। VC इज नथिंग बट द कॉमन मोड वोल्टेज। यहां से जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, वट एवर वोल्टेज आई एम गिविंग, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे IB1 अलग ले रहे थे, IB2 अलग रहे थे, तो इसके जगह पे नाउ आई एम कॉलिंग इट सिंपली VC। ओके, तो VC इधर से लें या इधर से लें, this is what's this, see here, in this circuit यहाँ VC, तो this is 1 और यही चीज this is the common mode because V1 is equal to V2। तो इसका अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं, the way we were writing for the previous expressions, we can go back and you can see, you see we were writing V1 equal to this, we were writing V2 equal to this। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले V1 का वैल्यू निकाला था, फिर V2 का वैल्यू निकाला था, IC1 का, IC2 का, V01 का, V02 का, फिर फाइनली V0 का वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पे V1 तो है नहीं इन माई दिस सर्किट, देयर इज नो V1, वी हैव VC। तो इसको हम लिख रहे हैं कॉमन मोड, VC इक्वल टू दिस IB1 इंटू HIE डिवाइड प्लस 1 प्लस HFE IB1 प्लस IB2 इंटू RE। ये सेम चीज इधर से भी लिखेंगे, IB2 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टर्म मिल गया। सो आई गेट दिस, ऑब्टेन दिस टू एक्सप्रेशंस, एंड देन solving for IB1 and IB2 using these two equations, we get this value IB1 is equal to VC divided by, let me enhance it a bit more. So we get the value, solving for IB1 and IB2 using these equations, we get IB1 is equal to VC divided by HIE plus 2 into 1 plus HFE into RE, which is equal to IB2। ठीक है, so this is what value that I obtain, IB1 का जो निकाल रहे हैं that is equal to the value of IB2। so solving for IB1 and IB2 we get this। okay, so we obtained the value of IB1 and we obtained the value of IB2 also, दोनों value मेरे पास निकल गया। so उसके बाद what we do is we obtain the value of V01, that is nothing but equal to minus IC1 into RC, that will be equal to this, IC1 का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड वी गेट HFE इंटू RC इंटू IB1। ठीक है, माइनस HFE RC, वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू। अब IB1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो वट एवर इज द वैल्यू, जो वैल्यू हम अभी निकाले थे वो वैल्यू को हम पुट कर दिए, सो दैट वैल्यू इज देयर। ओके, दैट इज इक्वल टू V02। तो V01 का वैल्यू V02 के बराबर ही है। यू कैन कम बैक हियर, यू कैन फाइंड दिस। ओके, यू कैन गो, वी कैन गो हियर। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे निकाला था, दिस इज IC1 इज नथिंग बट HFE इंटू IB1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वी आर राइटिंग IC1 इज इक्वल टू HFE इंटू IB1, ये हमने लिख दिया। So then we obtain this value and that is equal to V02, because V01 and V02 we are getting these two values. The common mode voltage gain AC using 16.41 may be written as V01 by VC या V02 by VC, कुछ भी ले ले, that value becomes equal to this, that value becomes equal to this। तो यहाँ पे if you are following this, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, एक पहला जो डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट बना है उसका एक H पैरामीटर इक्विवेलेंट बना है, और उससे हम V1, V2, IC1, IC2, V01, V02 और V का वैल्यू निकाल लिया। और उसको निकालने के बाद वी डू अ बिट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और उसको निकालने के बाद हम बताते हैं कि फेज कंडीशंस और फेज रिलेशनशिप क्या क्या है। उसके बाद हम कॉमन मोड सर्किट बनाए, तो कॉमन मोड में इनपुट को हम कॉमन कर दिए, वहां से वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ दिस VC। उसके बाद IB1 becomes equal to IB2, similarly V01 becomes equal to V02। ये सब निकालने के बाद we get the common mode, because पहला जो था that was a difference mode, so now what we are using is the common mode। तो common mode में we obtain the value of AC is equal to this, and the common mode rejection ratio, which is nothing but AD by AC, we have already seen, that is equal to HFE divided by RE by HIE।
For an ideal difference amplifier, the CMRR must be high, and this can be realized in practice by making either HFE high, इसको high कर दें, or RE high or both high, ये दोनों को high कर दें, ठीक है? So now how that can be done, it is beyond your scope of study. So we were supposed to find out this. If you get a question, you get a question on like this, that give the H parameter analysis of a BJT based difference amplifier and find out its common mode rejection ratio. So that is what you are supposed to do. Thank you.